हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पुट ऑप्शंस के बारे में। So put options are counterpart of call options and they are also extensively used by traders and investors for hedging and speculation. Now जैसा मैंने कॉल ऑप्शन में आपको बताया था, कॉल ऑप्शन में आपको एक राइट मिलता है, एक हक मिलता है आपका डिजायर्ड स्टॉक आपके डिजायर्ड प्राइस पे बाय करने का विद इन अ डिजायर्ड स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली पुट ऑप्शन में आपको एक राइट मिलता है, एक हक मिलता है to sell your stock at desired price within a desired specified period of time. Now, this definition can mean can differ for both traders or investors. So I'll start with investor. Now, investors, let's assume कि investor के पास कुछ Apple के stock पड़े हैं. In this case, let's assume it's 100 shares. Now, looking at current scenario because of this geopolitical crisis और इसमें जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर चल रहा है या फिर जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही है जिसकी वजह से मार्केट पे इम्पैक्ट आ रहा है, यू आर रियल लिटिल स्कैर्ड दैट कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाउनफॉल की तरफ जा सकते हैं, आपका गिर सकता है पोर्टफोलियो, तो आप उसको हेज कर सकते हो। हेजिंग इज नथिंग बट बेसिकली प्रोटेक्टिंग योर डाउनसाइड रिस्क। सो एज एन इन्वेस्टर व्हाट यू कुड डू इज यू कैन बाय अ राइट to sell your stock at $150 in case the market falls. So taking the previous example which I gave in my previous video, अगर आप put option का 150 का put खरीदते हैं which gives you the right to sell your Apple stock at $150 and supposingly Apple stock falls to $120, then you can exercise that right, sell your stock at $150 and buy your stock at a lower price which is $120. So you have saved this $30 ka gap, and which is basically an unrealized which is basically a kind of profit or the opportunistic profit. Now for traders this will be a little different strategy because traders do not hold any stock. So the example which I will take here is, let's assume कि Apple का रिजल्ट कल आने वाला है और Apple का रिजल्ट ट्रेडर एज्यूम करते हैं कि काफ़ी ख़राब आने वाला है एंड करंटली Apple का प्राइस $150 चल रहा है एंड रिजल्ट केम रियली बैड एंड इट केम बिफोर द मार्केट ओपन्स अप. So as soon as the market opens, the share of Apple falls from $150 to $120. Now because trader के पास एक put option था which has given them the right to sell the stock at $150, they can execute that right, exercise that right. They can sell Apple stock at $150 and again buy back the Apple stock at $120, thereby getting a profit of $30 without owning the stock. So this is how a trader plays, this is how an investor plays in case of put options. Now again, to understand put option we need to understand the same four things, which is strike price, premium, expiry and underlying. Now I will take an example using my Interactive Brokers terminal and I will show you what put options are. अगेन ये मेरा इंटरेक्टिव ब्रोकर्स का टर्मिनल है। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी वॉच लिस्ट है जिस पे मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और दिस इज़ ऑप्शन चेन जो कि सारे अवेलेबल ऑप्शंस दिखाती है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे. सो आई हैव सिलेक्टेड एप्पल ऑलरेडी. So for Apple, these are all the options which I have. On the left hand side is calls and on the right hand side it's puts option. Now going back to our example for investors and traders, so 150 ka put option currently is trading as $3.75. So 150 का strike का मतलब है this is the price at which I want to sell my stock, and to get that right I need to pay a premium, and the premium is around $3.75 in this case. And this contract will be valid for 24 days in this case, which is expiring on April 8th. So this is called expiry, and underlying is basically the stock at which I'm looking at all the options. So underlying is Apple in this case. Now if I want to buy 150 ka put option, I will click it. I will try to see the payoff diagram. And how will I see it? I'll go to margin and performance, and यहाँ पर मैं performance profile पे click करूँगा. And as soon as I see the performance profile, you can see the payoff diagram on the right hand side. On the y axis यहाँ पे सारा profit and loss है, और x axis पे आपका corresponding price है. So you can see जब तक आपका एप्पल का स्टॉक 150 या उसके ऊपर रहते हैं, यू हैव अ लिमिटेड लॉस विच इज़ $374 इन दिस केस. एंड एज सुन एज एप्पल का स्टॉक स्टार्ट्स फॉलिंग बिलो $150,
you start making money. Obviously, it's not like call option where you can make unlimited profit. The profit is limited to the maximum price of the stock. So क्योंकि एप्पल कैन नॉट गो बिलो ज़ीरो, तो 150 से जैसे ही एप्पल नीचे जाना चालू होता है आपका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता रहता है, एज यू कैन सी इन द पे ऑफ डायग्राम. सो इन पुट, the profit potential is really high, limited to stock falling to zero, and on the upside, if the stock starts going up, your loss is limited. So this is the payoff diagram for put option. सो अभी आपने पुट ऑप्शन देखा और इसके प्रीवियस वीडियो में आपने कॉल ऑप्शन भी देखा था. सो कॉल एंड पुट ऑप्शन को कॉम्बिनेशन में हम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं विच कैन हेल्प अस टू hedge as well as speculate in the market, which I will tell you in my next few videos. But more important is, in the next video I'm going to discuss about the people who are selling you these, right? Like the people who are selling these options, like option, they are called option writers and option sellers. So अगर आप ये राइट लेते हैं तो obviously कोई आपको राइट बेच भी रहा है, and they play a very, very significant and important role in all these option strategies. So please stay tuned and keep on watching.